Hello, good morning everyone. So today we'll discuss our JavaScript, that is Scrum to syllabus, and important questions we will discuss today. Okay, so let's start now. So you know that this JavaScript, this is your Scrum to examination, and now we are discussing all the questions, important questions of JavaScript for examination. So let's start with this first question. Okay, so like this I will explain with the help of solution. So first we have this, give any two tips to remember while writing a JavaScript command. Okay, so we all know that this JavaScript start with script tag and you have to end it with slash script. So let's see this first answer. So what is the two tips that you should remember जब आप JavaScript code को लिखते हो? So don't forget var keyword while assigning a variable value for the first time, because we all know that in JavaScript variable is declared with the help of this var variable. var से आप variable को declare करते हो, and do not forget this variable, and use semicolon for the line termination. When the line is terminated, you have to, at the end you have to use this semicolon. Okay, so let me show you what is a semicolon here. Like this you have to end after each line. Okay, so these are the two tips. Now let's see what is the output. Now next question is, write the output of the given code. Okay, so you can see HTML body script, and as this is an array in JavaScript. Now we have this blue, we have red, we have orange, we have yellow. Okay, now I have used the function that is s dot reverse. S is our array, and s dot reverse means that now it becomes, here it is now blue, red, orange, yellow. Okay, so now after reverse it will become now येलो ऑरेंज रेड ब्लू, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू एस डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4. नाउ द एरे, इस एरे की लेंथ कितनी है, 4 है. सो आई की 0 से लेके आई की लेस देन 4, यानी कि 0 1 2 3 4 तक, 4 से छोटे तक चलेगा. आई की लेस देन 4, नाउ इट विल रन फ्रॉम 0 1 2 3, and the loop here is I equal to I plus 2. Now it run for first 0, and after that it run directly to 0 plus 2, that is 2. तो फर्स्ट वैल्यू जो उल्टी है मैंने रिवर्स कर दिया. फर्स्ट वैल्यू क्या है, येलो, एंड येलो इट इज नाउ एस का 0 डॉट अपर केस, दैट इज अ येलो. अब येलो आपका प्रिंट हो जाएगा अपर केस में, दैट इज वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, दैट इज येलो कैपिटल. और I plus 2 था. Now you can see this is I plus 2. Now it will goes from 0 1 2 that we have, this is red. Now it will become red, red, that is also capital. Okay, now you can see in solution also, this is yellow, this is capital and red. Okay, why this comes to the next line, because we have used this break function. This is a break tag, students. Okay, this br tag, if you are using, it will give your output in the next line. If you are not using it, definitely it will give your answer in the same line. Okay, so this is a use of this br tag. If you're using the br tag, it means that it will giving the output in the next line. So first we have this yellow, and after that we have this red. Why this comes in the next line, this is a simple funda that we are using this br tag, that is a break tag. Now after this next question, so this will not be in the syllabus, explain any three attributes of the object tag. So now let's come to the fourth part, that is give and explain any three applications of JavaScript. So students, we have discussed JavaScript and videos are also there. I've also explained, three videos are also there on YouTube. I've also explained the JavaScript coding, and I've also explained the NCERT book that we have for web application. Now, student, three applications of JavaScript are, so this you can use in computer game development. You can also use in interacting web development. Okay, so if you want to make your dynamic pages, you can use this JavaScript code. Now, next we have this desktop application development. Okay, these are simple uses because we all are using HTML, but we are moving to JavaScript after learning HTML because we want to make the dynamic pages. Now let's move forward. Now we have fifth number question. So write a code in JavaScript that accepts a binary number. Okay, so like a binary number, we have to see in a form of zeros and one. Okay, 0 1 0 1 0 1, and you have to display its decimal equivalent number. So now let's see. So user will basically enter here the binary number. So write a code in JavaScript that accepts a binary number from the user and display its decimal equivalent number. So in exam you can write only this code. Script se start karenge, no need to write from HTML and all, because you're writing the simple from start script. This shows that this is a JavaScript code. Equal to prompt. Prompt I'm using to take input from a user, and user here it is giving that it is a binary digit. So user is entering the binary digit, that means equal to prompt enter binary digit. Now b equal, what we have in b equal to parse int. Parse int basically it give the decimal value, and a is a binary number that you are giving. So a ka 2 base. Okay, यहाँ पे जो 2 base है, it shows that it converts this binary number to and displays decimal equivalent number. So binary से equivalent में convert हो जाएगा. Now decimal equivalent of
this a plus a means ये देखो ये as it is print होगा document dot write से output print होता है decimal जो भी आप इसमें document dot write में देते हो it will print it on a console. Now we have this decimal equivalent of plus a. Plus a means that we have this a whatever number you are entering. If you are entering 010, so we have this 4 2 that is 2 1 that is plus b. Okay, now after that we have sixth number question. Write a code in JavaScript to accept 5 number from the user से 5 number आपको accept करने हैं and you have to store them in an array. इनको आप array में store करेंगे and display the sorted array. Simple question. So basically you have to create an array in JavaScript for a 5 number. So we have the script tag. Okay, I have created an empty array, a double r, that is an empty array. So I'm using a for loop here from value 0 से लेके less than 5. It means 0 1 2 3 4. Okay, now जब 0 की वैल्यू k की वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट्स, तो पार्स इंट मैंने किया बिकॉज हमें स्ट्रिंग नंबर, हम अगर प्रॉम्प्ट यूज करते हैं तो स्ट्रिंग में एंट्री होती है. Now to convert the string to integer, I have used this parseInt. So x में x की k की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू जाएगी. Then I push this array dot post, जो भी वैल्यू आप दोगे वो पुश हो जाएगा array के अंदर. ऐसी दिस वैल्यू 0 के लिए 1 के लिए आप वैल्यू दोगे, 2 के लिए वैल्यू दोगे, 3 के लिए वैल्यू दोगे, 4 के लिए वैल्यू दोगे. So students, understanding the code is important. Okay, here the important part is you have to understand the code because you all can run this, but in examination you have to write this code. Okay, so at times understanding is also important. Writing a code, that's great, you all are writing, but explanation and understanding is also very important here. Okay, अब यहाँ देखो, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स पुश हो जाएंगे. आफ्टर दैट आई हैव यूज दिस s इक्वल टू air डॉट शॉर्ट, बिकॉज इसको आफ्टर लूप इसलिए किया है मैंने, जब सारे मैं पुश करा दूंगा एलिमेंट 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ s इक्वल टू a डबल r डॉट शॉर्ट. Okay, now you can see I have used this short function and it will definitely give the answer in sorted array. Okay, now after that next we have write a code in JavaScript to accept a number from a user and generate a random number that is greater than the number entered. Okay, so if you want to generate a random number, student, keep it in your mind, math.flow. Okay, basically I have used this. Why I have used this floor? जब math और random से क्या होगा, any random number it will be generated. अगर user ने दिया x, user ने दिया 5, तो it will generate a number from 0 to that is 4.99 something. Okay, ये वहाँ तक रिटर्न कर देगा. If I enter a number 100, तो if 0 से लेके 99 तक की नंबर रिटर्न करेगा. And if the random number is generated 1.96, any number between 0 to 99, तो math.flow क्या करेगा, सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट देगा, that is 1. 1.96 का सिर्फ आपको 1 मिलेगा. ओके, लाइक दिस यू कैन डू दिस. और अगर आपको इसमें इवन नंबर प्रिंट करना है तो मैंने मॉडुलस 2 यूज करा है. ओके, so here the important part is only random function. It can come in easy way because math.flow, math.random क्या use होता है, because it is used to give the random numbers. Okay, any random number from, if the value, if you want a random number from 0 to 99, you will use the 100. Write a program in JavaScript to accept marks in 3 subject. User से 3 subject में marks लेने, display the total marks obtained और user ने कितने total marks obtain करे, and the percentage you have to basically calculate with the help of JavaScript code. Grade और ये देखो scheme, ये scheme दी इन्होंने. अगर किसी के marks greater than equal to 75 हैं, then it will give you a. अगर less than 75 है and greater than equal to 60 हो या 60 से बड़े हो लेकिन 75 से छोटे हो, 75 यहाँ पे नहीं, जब 75 हो जाएंगे तो a आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको. And if it is greater than 60 or less than equal to, greater than equal, so less than 60 और 60 से कम यानी 59 तक, and greater than equal to 33, that will C, ये सब आपको प्रिंट करवा दें. So that I've used as sub1. मैं sub1 में parse int that user will enter the, by using the prompt function, user enter the subject 1 marks. Okay, and we have this sub2 that is parse int I have using. So prompt subject to marks that I have entered. Now you can see parse int मैंने क्यों use किया, because string को मुझे integer में like this. Now like this it will convert and you will get the subject 1, subject 2 and subject 3 marks. So after that I will give the total of this, that is total sub 1 plus sub 2 plus sub 3, because मैंने इसका total कर लिया तीनों subject के marks का. And after that I have used this per means percentage, that is a total means अगर 3 subjects, so I have divided this total by 3, you will get the percentage, but I have to multiply it by 100 also. Okay, so you can multiply it by 100 also and you will get the percentage easily. If the percentage is already given that if the percentage is greater than 75, so per, that is per per. If it is greater than 75, but it will show the grade equal to a. Okay, ये मेरा ऊपर स्कीम दी हुई थी. And after that we have if per, that is a less than, that is greater than equal to 60 and less than 75, क्योंकि अगर 75 से कम होना चाहिए यानी कि 74 तक, 75 पे तो मैंने a दे दिया है. ओके, मैंने if का यूज किया है, if because I have used this according to the condition that is given above. Now if per, that is less than 60, greater than 60 and sorry, greater than equal to 33 and less than, देखो ना, less than 60, 60 से छोटा यानी कि 59. Easy question.
ओके, डॉक्यूमेंट राइट से मैंने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 टोटल मार्क्स आई हैव प्रिंटेड. ओके, let's see the next question we have. Next is also a very important question, students. ये देखो 8 में आपको सिर्फ ये प्रिंट करना था according to the condition that is given. Now we have a ninth question, that is what may be the possible output of the following snippet. So predict the output of the following. We have HTML body script bare fruit. ये देखो इसका आउटपुट देना है. अब bare fruits में ये एरे मैंने डिक्लेयर करा है, तो एरे में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 1 and 2, बिकॉज लेंथ हमेशा 1 से कैलकुलेट होती है. अब लेकिन ये करने के बाद इसने क्या किया, फ्रूट के 50 तक ले गया एरे को. सोचो 50 पे जाके ऑरेंज स्टोर कर दिया, तो यानी कि 0 से लेके वी हैव दैट वैल्यू दैट इज 50. तो 0 से लेके 50 तक कितनी लेंथ हो गई? अभी तो बोल रहा है हमें डॉक्यूमेंट और राइट फ्रूट्स की लेंथ कितनी हो गई? 0 से लेके 50 तक हो गई. फ्रॉम 0 टू 50 इट मींस 51 एलिमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा 51. ये देखो दो एलिमेंट्स तो ऑलरेडी थे, फिर इसने फ्रूट के 50 पे जाके, ना फ्रूट के 50 इंडेक्स पे इट हैज गिवन द वैल्यू दैट इज ऑरेंज. Now you know that array start from 0. Okay, array index start from 0, so 0 is 50, it gives you the 51 elements. That is the length of this array. After that, it goes to the next line, that is a br tag, and after that, it will print end of the program. Okay, let's see the answer of this. Now you can see 51. That is the length of this array, and after that, it will return the end of the program. Now let's see next that we have 10th question. Okay, before that, let's see this. Rewrite the following. Rewrite the following using switch case statement. Okay, ये switch case में आपको convert करना है. We have given this if a equal to 1. अगर a 1 होता है तो document dot write Monday, Wednesday, Friday print होगा. Else if अगर a equal to 2 print होता है then document dot write Tuesday, Thursday, Saturday print होगा. नहीं तो Sunday print हो जाएगा. Okay, now what you have to do students, now let's see. ये देखो इसको मैं स्विच में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो स्विच में यू ऑल नो दैट वी हैव टू गिव एनी वैल्यू दैट इज अ केस. अब a is a variable that I have given, so case 1 is डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे प्रिंट होगा. दिस इज आवर फर्स्ट केस. नाउ यू कैन सी ए की वैल्यू 1 है, केस 1 में ए की वैल्यू 1, मतलब केस 1 ए से रिलेजेबल करो. स्विच में वो चेक करेगा जब केस 1 होगा, फिर केस 2 होगा, तो यू हैव टू प्रिंट दिस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. नहीं तो अगर दोनों में से कुछ नहीं होता, नाउ यू विल यूज दिस डिफॉल्ट केस दैट इज इन स्विच केस. ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव? 11th क्वेश्चन. अभी देखो 10th क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज अ नॉट अ नंबर. अगर किसी भी नंबर में आप 5 ऐड करते हो, इट विल गिव ओनली अ नॉट अ नंबर. ओके, मल्टीप्लाई करो, दिस इज नॉट अ नंबर. इफ यू मल्टीप्लाई इन नॉट अ नंबर, इट विल गिव यू नॉट अ नंबर ओनली. अगर आप इसमें 5 ऐड करते हो, सो इट विल गिव यू नॉट अ नंबर ओनली. ओके, एंड nan is not a number. After that, let's move on to which one of the following is not a valid data type in JavaScript. So JavaScript में हमने number देखा है, we have time also, we have decimal, but list is not there in JavaScript. Now document object uses dash method to object output some text to the web page. अगर आपको आउटपुट देना है, if you want to print anything on a web browser, now you have to use this document dot write method का ही तो use कर रहे हैं हम. Okay, now let's see 13th question. What will be the output of the following JavaScript statement? ये देखो 345 ये string में था, जब हम 10 देते हैं तो ये integer में print करता है parse int. Very important question. जब आप 345 में कॉमा 10 लिखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? स्ट्रिंग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर. Okay. Now next very important question. Which method in JavaScript removes and return the last element? लास्ट आइटम हमारा रिटर्न करता है, दैट इज अ पुश फंक्शन, नहीं पॉप फंक्शन. पॉप हमेशा क्या करता है? इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे. नाउ आफ्टर दैट वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट. अब क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है? नाउ लेट्स सी दिस. ये देखो, so we have this client side JavaScript as well as server side JavaScript. So client side is interpreted by the browser. ठीक है, ये जैसे अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मैं ब्राउजर के थ्रू उसको हैंडल कर सकता हूँ, बट सर्वर साइड इज नॉट इंटरप्रेटेड बाय ब्राउजर, इट इज executed server end. Because if I give you an example, now let's see if I run my HTML code on browser, that is a Google Chrome, but server side पे तो ऐसा नहीं होता. Okay, client side cannot access file system. Yes, file system में access नहीं कर सकता हूँ. I cannot open the files that is available at server side, but server उसको access कर सकता है. क्लाइंट साइड कोड कैन बी सीन यूजिंग व्यू सोर्स. आप व्यू करोगे सोर्स को, आपको अपना कोड पूरा दिख जाता है, बट इसमें नहीं होता है ऐसे सर्वर में. ये लैंग्वेजेस क्लाइंट साइड कौन कौन सी है? जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, विजुअल बेसिक हो गया, स्क्रिप्ट पीएचपी, एंड ये याद रखना पड़ेगा आपको, पाइथन इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज. एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट. Now let's see question number 16 we have. So question number 16 we have, that is what will be the output of the following. Okay, here it is a equal to b positive. b positive आपको दिख रहा होगा, and where d में that is a variable d में मैंने दिया a dot index of positive. ये पॉजिटिव कहाँ से शुरू हुआ है? दैट मीन 0 1 2 3. तो द आंसर विल बी 3. ओके, ये देखो 0 से मेरा इंडेक्स शुरू होगा, एंड आई स्टार्ट काउंटेड 0 1 2 पे गैप आ गया, और 3 पे पॉजिटिव p का p स्टार्ट हो गया, सो इसका आंसर आएगा 3.
डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन जो लेंथ आप स्टार्ट करते हो स्टूडेंट वो हमेशा 1 से काउंट करते हो, 1 2, ये देखो 3 वाला गैप, 4 4 पे P है, 5 6 7 8 9 10 11, so 11 is the answer. Yes, 11 is the answer. Okay, now let's move on to the 17th question. Assuming variable a hold a के अंदर 25 वैल्यू है ना, b hold 2, a के अंदर 25 वैल्यू है ना, b की वैल्यू जो है 2 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर, ओके, एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो उसका टाइप बता दोगे आप, दैट इज अ नंबर टाइप, ओके, एंड हियर आउटपुट आपको देना b माइनस माइनस, तो b की वैल्यू कम हो जाएगी, इफ b होल्ड्स 2 इट विल बिकम 1. a इज नॉट इक्वल टू b, क्या a b के बराबर नहीं है, ट्रू और फॉल्स, जब भी नॉट इक्वल नॉट ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, ओके, अगर ये सही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, बिल्कुल सही है बराबर नहीं है वैल्यू. Now the next question that we have is define an event and write any two commonly used event. Two commonly used event कौन से हैं? Now let's see this. Okay, so we have already discussed before and I have already made a video. You can see this because round 2 all videos are given here. Okay, in the playlist that is also mentioned, web application playlist. So write any event, any type of interaction between a user and a web page. So user मेरा और web page का जो interaction है that is called a event. एंड जो दो कॉमनली यूज्ड इवेंट है हमारे पास दैट इज ऑन क्लिक. ऑन क्लिक मींस जब भी मैं किसी यूजर पे, नाउ लेट्स सी इफ आई एम मूविंग अ माउस ऑन अ वेब ब्राउजर, तो ऑन क्लिक मींस जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा ऑन माउस ओवर, जैसे उसके ऊपर माउस लेके जाओगे, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, यू हैव टू रिमेंबर ओनली, ओके, because the question may be coming theory part. On 19 there is write JavaScript code to display a confirm box, आपको शो करना है with a message do you want to continue. Let's see this, इसमें exciting question है इसमें. Write a JavaScript code to display a confirm box. Confirm box आपको बनाना है with the message do you want to continue. So we have this ch equal to confirm, that is do you want to continue. ओके, ये देखो ये हमारे पास कंफर्म है, ये तो करते हैं कंफर्म बॉक्स में चेक करने के लिए, ओके है कैंसिल है, सिंपल आप उसमें कंफर्म में लिख देंगे सी एच में. अगर बी में है क्रिएट एरे एक्स, तो कैसे क्रिएट करते हैं, एक्स इक्वल टू न्यू एरे से एक नया एरे क्रिएट हो जाता है, ओके. नाउ स्टोर टॉप एंड बॉटम इन द एरे एक्स, तो इस एरे एक्स में हमें टॉप और बॉटम स्टोर करना है. सो सिंपल एक्स इक्वल टू टॉप कॉमा बॉटम, एक्स जो एरे बना है मैं उसमें क्या लिख दूंगा, और इसको आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन क्लोज करेंगे. Now let's see store date and time in a variable b. तो variable b में अगर date and time store करना है, so I will use this new date. Print the message welcome on the web page. Or for printing, you all know that you have to use this document.write function that I will give you. So writing 5 features of JavaScript, students, we are revising this from the starting that JavaScript is an interpreted language, not as compiled language. इसको line by line इसमें code execute होता है. So it is an interpreted client-side script language. It is object oriented. It is a platform independent. Okay, platform independent means you can run any code from one system to another, from one interface to another. एक operating system दूसरा operating system पे आप चला सकते हो. JavaScript can validate user data and used to make animation interactively in HTML. Okay, now let's see 21st question. JavaScript user can get and set properties of an object using this. Okay, प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं, और डॉट डॉट और दिस स्क्वायर ब्रैकेट वी आर यूजिंग. ओके, so now you can see, please remember this. Okay, this fourth question you need to remember. So this answer is fourth part. Now what is the output of this 22 question? Now let's see 22. What will be the output of the following? A is equal to hardwork pace. Okay. Now variable day is a dot index of pace. So pace कहाँ पे मिलेगा हमें? Let's start counting 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे. So इसका 22 का फर्स्ट का आंसर हमें 9 मिल गया. देखो ये, ठीक है, 9 इज द इंडेक्स. ये इंडेक्स जो कह रहा है ना पेज, तो पी जहां भी आपको पी स्टार्ट हो जाएगा ना पेज का, तो वही वही आंसर आपको लिखोगे. डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है, 9 के बाद 13 बिल्कुल सही. Okay, and this question number 28 is same as question number 17. Okay, so no need to do this. Now next question is define object. Object क्या होगा? So this object, student, so this object is a collection of, we already discussed के अंदर name होता है, and we have this is the name value pair. Object can be created. If you want to create an object, you have to use this obj equal to new object. What is a property in this object? So property, any object have a property. It can have a color, it can have a dimension also. So it is the characteristics of object. Property of an object can be accessed using this dot operator. So this questions of theory you need to remember. What are the methods? Methods define the functionality of an object. Object क्या function perform कर रहा है? These are the objects. Come method. ठीक है. 30 questions same as 19 हम कर चुके हैं. Now question number 31, write code snippet JavaScript to accept height of 5 स्टूडेंट. 5 स्टूडेंट की हाइट आपको लेनी है और एरे में आपको लेनी है, ठीक है, एंड डिस्प्ले द टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हाइट ऑफ द स्टूडेंट. सो पार्ट्स से मैं इसको इंटीजर में वैल्यू ले लूंगा, फर्स्ट हाइट, सेकंड हाइट, थर्ड हाइट, फोर्थ हाइट, फिफ्थ हाइट,
and then I will use the math function tallest equal to math.max stu1 stu2 stu3 stu4 stu5 these are the students और इसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो टॉलेस्ट में आ जाएगा स्मॉलेस्ट होगा जो का मिनिमम इसमें हम लिखेंगे math.min स्मॉलेस्ट हाइट शो करनी है ना ओके स्टूडेंट्स उसको math.min कर लेना ठीक है these are the math function that I am using to do this program. Now after this next we have this write a program in JavaScript to display a weekday randomly from the array of the days of week given below date of week डे ऑफ वीक आपको दिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको कोई भी एक रैंडम प्रिंट करवाना है लेट्स सी स्क्रिप्ट डेट डे ऑफ वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एक्स अब देखो मैं कैसे रैंडम फंक्शन इसमें यूज कर रहा हूँ कैसे ध्यान से देना आप देखेंगे आप सारे मैथ डॉट रैंडम में मैंने वैल्यू दे दी है स्टार 7 और स्टार 7 का यूज क्या है ये कोई भी एक रैंडम नंबर प्रिंट करेगा जीरो हमेशा रैंडम नंबर प्रिंट करता है 0 से 6 तक ठीक है अब इसने प्रिंट कर दिया 5.77 तो मैं क्या करूंगा इसीलिए मैंने मैथ डॉट फ्लोर लिखा है बाहर सो दैट if it take any random number from 0 to like 5.77 अगर इसने लिया तो सिर्फ वो 5 ले सिर्फ मेरा इंटीजर वैल्यू लेगा 5 आ जाएगा सो डॉक्यूमेंट राइट में डीओडब्ल्यू के 5 में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 तो 0 1 2 3 4 5 5 पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 सैटरडे आ जाएगा ठीक है ये यूज होता है मैथ डॉट रैंडम का दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ स्टार 7 इसलिए लिखा है बिकॉज देयर आर 7 एलिमेंट्स ओके और 0 से लेके 6 तक हमेशा चलता है रैंडम एक कम तक चलता है और 0 से स्टार्ट होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कोड इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ यूजर से एक स्ट्रिंग आपको लेनी है डिस्प्ले द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वर्ड गुड इन एंटर स्ट्रिंग भाई पहली बार गुड कहां पे आ रहा है वो आपको प्रिंट करवाना है तो स्क्रिप्ट str equal to prompt enter the string यूजर ने एक स्ट्रिंग डाली डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गुड इन स्ट्रिंग इज पहले ऑकरेंस निकालने के लिए देखो स्ट्रिंग डाली थी तो str डॉट इंडेक्स ऑफ का यूज करोगे इंडेक्स ऑफ फंक्शन यू हैव टू यूज गुड गुड का क्या होगा वेयर इज द गुड हियर अगर आपने डाला गुड मॉर्निंग सो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा दिस इज द फर्स्ट ऑकरेंस जैसे ही गुड आ जाए जहाँ भी गुड मिल जाए तो फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया तो वेरी गुड 0 आ जाएगा आंसर now next question these are all output question you need to remember this and it basically you have to revise this okay if you have seen this whole video your work is done so write a program in javascript to accept first name पहला नेम लेना यूजर से लास्ट नेम लेना यूजर से डिस्प्ले नंबर ऑफ करेक्टर इन हिज फर्स्ट नेम उसके पहले फर्स्ट नेम में उसके कितने करेक्टर हैं ठीक है एंड डिस्प्ले करंट डेट प्रिंट कराना है एंड आफ्टर दैट इज नेम एज द इनिशियल ऑफ द फर्स्ट नेम दिस क्वेश्चन इज सैंपल पेपर ऑल्सो आप सैंपल पेपर देखोगे वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अगर उसका नाम है कुलदीप कुमार या कृष्ण कुमार तो उसका के डॉट कुमार आ जाएगा फर्स्ट नेम का सिर्फ इनिशियल्स लेगा नाउ आई हैव रिटन दिस f1 prompt enter first name as enter second enter the first this is the last name okay let me show you this I've already explained this आप इस वाले क्वेश्चन को ना सैंपल पेपर से देख सकते हैं बिकॉज इन द प्लेलिस्ट वीडियो इज आल्सो देयर 35 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ओके स्टूडेंट्स नो नीड टू डू दिस अगेन ऊपर जाएंगे दिस प्लेलिस्ट इज देयर ओके प्लेलिस्ट वेब एप्लीकेशन प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट व्हिच एक्सेप्ट 3 नंबर्स एज अ आर्गुमेंट 3 नंबर लेना और उसमें से डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर सो स्क्रिप्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट मैंने बनाया एंड जो भी पता है आपको फंक्शन बना दो यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन नाउ वी हैव दिस ग्रेटेस्ट 10 23 12 सो a वैल्यू 10 b वैल्यू 23 12 एंड x इक्वल टू math.max मैक्स में मैंने abc दे दिया जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी और मैंने x को प्रिंट करना this you have already done that's great functions and explain the following function with respect to javascript substring का मतलब क्या होता है this method extract characters between two given number as a parameter let's see आपको मैं इसका प्रैक्टिकली दिखाता हूँ अगर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है वंडरफुल डे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में a डॉट सब स्ट्रिंग लिखा है 6 से लेके 9 तक तो 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 6 7 8 तक प्रिंट हो जाएगा यानी कि फुल प्रिंट हो जाएगा 6 7 8 एक कम तक जाता है ठीक है सो 6 7 8 दैट इज 0 1 2 3 4 5 5 6 तो full 6 7 8 तक जाएगा ठीक है बच्चों now we have this concat that is this method is used to combine two arrays दो array को combine करने के लिए हम यूज करते हैं concat function का that is a document dot write a dot concat b जो a के पीछे हमने b लगा दिया and it will display this 10 20 30 40 50 what is the use of this shift function this method removes the first element from the beginning अगर पहला एलिमेंट हमें निकालना है array से फर्स्ट एलिमेंट निकालना है then I have to use the shift function document dot write a dot shift okay तो a dot shift से क्या होगा ये आपका 10 एलिमेंट रिमूव कर देगा and we get the list as this ठीक है Now this is an important question. So Sunil has written following code. Sunil ने code लिखा है to store subjects in an array and display the total number of subjects in an array. ठीक है? कुछ subjects ने declare करें. His code is not running properly. उसका code नहीं चल रहा है. So you have to identify and underline the syntax error in the following code and write the corrected code. ये देखो उसमें सबसे पहली गलती इसने करी है var का हमेशा small लिखना है. D का capital लिखा है that is also small. और यहाँ ऊपर देखो उसने subject को capital जो variable declare किया है that is in capital letter S but now he is declaring here
that is a S. Okay, so that's why these are there. उसको आप highlight कर सकते हैं. Now next we have 39 question. Now let's directly do from the questions. Okay, so here we have. So the question is output of the following would be that is parse in 011 and it will convert it into octal form. Okay, now let's see. So okay, so if you convert it, it will give you the answer as 9 because binary से जब हम octal में convert करते हैं then it will give you the answer. So this is a octal conversion. ये binary से direct इसको octal में convert कर रहा है. So you need to remember this only. भाई what is the use of this? Now dash is used to convert string to a integer. String से अभी हमने पढ़ा है parseInt को use करते हैं हम string से अगर हमें integer में convert करना है. Now 41 is built-in object called dash is used to handle more advanced mathematical functions. So we have this math function. We have already seen this 41 math function. See answer. Numbers in JavaScript. So numbers in JavaScript this is 64-bit format. याद रखना numbers होते हैं this is in 64-bit format double precision. Okay. You need to remember some questions. A dash is a classification of the type of data that variable or object can hold. Now let's see this. So we have this data type. So what is this? We have this data type. Data type ही तो होता है ये class की type का data का type क्या है? Now 44 is dash is called as bitwise shift right with zero operator. So ये देखो and the bit shifted on the left are always zero. So ये आपका simple सी बात है that is a C operator that is a right shift bitwise shift right. ठीक है? दो operator हैं bitwise right shift bitwise left shift. So extension of the JavaScript we have .js. ये कौन से ऑपरेटर हैं? These are relation operator. Dash tag alerts browser about the scripting language JavaScript के लिए कौन सा है? Script tag है. DOM that is a document object model. Okay, ये remember करना. You need to remember these questions. In JavaScript, objects are just collection of name value pair. We have already discussed this. Okay, here it is name value pair. Identify the statement that is false with respect to JavaScript. JavaScript is object बिल्कुल सही बात है object oriented programming language है. JavaScript function can accept another function as a parameter. बिल्कुल एक function दूसरा function दे सकते हैं. It is possible to instantiate the defined object to create object instantiation in JavaScript. बिल्कुल बना सकते हो object, but ये नहीं. The user cannot use JavaScript to add multimedia elements. Okay. Now let's see 51 we have. So give the output of the following code snippet with justification. इसमें क्या होगा जब भी हम नॉट अ नंबर को किसी से मॉडुलस करते हो मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड करते हो विल गेट नॉट अ नंबर एज अ आउटपुट इज फाइनाइट माइनस इट फाइनाइट क्या फाइनाइट है इंफिनिटी ऑब्वियसली इट विल रिटर्न फॉल्स ऑब्वियस सी बात है दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न फॉल्स थर्ड इज अर्ली मॉर्निंग ये हम कर चुके हैं रिप्लेस करना है देखो मॉर्निंग की जगह इवनिंग आ जाए तो मतलब जहां जहां मॉर्निंग है वहां इवनिंग कर दो अर्ली इवनिंग गुड इवनिंग ओके नाउ लेट नेक्स्ट इज फॉर आई की वैल्यू 1 आई की लेस देन 1 तो एक तक ही चलेगा डॉक्यूमेंट डॉट हेलो प्रिंट हो जाएगा ये देखो ठीक है बाय बाय why it is returning bye bye now let's see this okay ये देखो document dot write now you can see ये देखो ये तो प्रिंट होगा नहीं ये इस लूप के अंदर है जैसे ये लूप एग्जीक्यूट तो होना ही नहीं है बिकॉज आई की वैल्यू 1 है ना स्टूडेंट्स और आई की वैल्यू लेस देन 1 तक चलेगा आई की वैल्यू 1 हुई आई की वैल्यू 1 चेक कर रहा है कि 1 लेस देन 1 है नहीं है तो इसलिए लूप से बाहर हो गया और सिर्फ ये बाहर जो लूप में मैंने लिखा हुआ वो प्रिंट हो जाएगा दैट इज बाय बाय ठीक है खुद सोचो आप क्या 1 1 से छोटा नहीं है if it is false it will come to this document dot write bye bye ठीक है नेक्स्ट बाहर आएगा अपने लूप से और ये बाय बाय वाला प्रिंट कर देगा नाउ फिफ्थ वी हैव str इक्वल टू हेल्थ एज वेल तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट str डॉट मैच अब ये देखो मैच कैसे हो जाएगा w तो छोटा है और w बड़ा है तो ये तो पहले तो नल प्रिंट करेगा फिर उसके बाद ये वेल्थ का जो भी चेक करता है एज इट इज वो प्रिंट करता है अगर यहाँ पे नहीं मिला नल प्रिंट करेगा और लेट्स सी दिस ये देखो सो वी हैव दिस 51 नंबर सो नल उसके बाद वेल्थ आ जाएगा बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द ब्रेक टैग नाउ 52 क्वेश्चन पे चलते हैं 52 is write the code in JavaScript to accept a number from the user. It should display whether the number entered by user is even or odd. Okay, the code should display an alert box also if a number is less than or equal to 0. अगर किसी ने 0 और 0 से कम भी नंबर दिया है तो वो अलर्ट बॉक्स शो करेगा. Now let's see this code. स्क्रिप्ट टैग में लिखा है x इक्वल टू पार्स इंट मैंने नंबर डाला है तो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर x लेस देन इक्वल टू 0 अगर 0 से छोटा या 0 है तो इट विल गिव अ अलर्ट अलर्ट आ जाएगा. आता है ना वार्निंग मैसेज आता है नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0. एल्स इफ अगर ये नहीं होता तो अगर किसी ने 12 दे दिया दैट 12 मॉडुलस ऑफ 2 दैट इज अ रिमाइंडर ये रिमाइंडर है. आपको सोचो 12 को 2 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा सो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा. अगर 0 रिमाइंडर आता है तो इवन हो जाएगा. ओके ऑब्वियस सी बात है ना अगर आप 12 लोगे 14 लोगे 14 मॉडुलस ऑफ 2 दैट इज आल्सो अ इवन नंबर. ओके मॉडुलस आपको यूज करना है. नाउ लेट्स सी 53 कोड.
The question is here also. So write a code in JavaScript to accept a string from a user. ठीक है, यूजर से आपको स्ट्रिंग लेनी है, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो सिंपल है, एसटीआर में आप प्रॉम्प्ट लेंगे, एंटर द स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस एसटीआर डॉट लेंथ से प्रिंट करवा दोगे. प्रिंट द स्ट्रिंग इन अपर केस में करना है तो स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग यूजर यूजर देगा, सो एसटीआर डॉट टू अपर केस दे देंगे. प्रिंट द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, दो कैरेक्टर प्रिंट करवाने तो एसटीआर डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेके 2 तक, यानी कि 0 1 तक चलेगा, दो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे. ओके, और रिवर्स करना है तो एसटीआर डॉट रिवर्स कर देंगे. सो दीज आर द फंक्शंस दैट यू नीड टू रिमेंबर. दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट. What are the anonymous function in JavaScript with an example? So basically, JavaScript allows to create. We can also allow. We have user-defined function. We have built-in function. So anonymous function भी होते हैं. Anonymous function does not have a name. इसका कोई नाम नहीं होता है. ठीक है, ये देखो, जैसे function मैंने डायरेक्ट डिक्लेयर किया है, मैंने इसको किसी वेरिएबल के अंदर दे दिया. देखो x इक्वल टू 10 और z इज अ फंक्शन का कोई नाम नहीं, और z के अंदर मैंने वेरिएबल दिया, ये z कॉल होगा. Okay, now you can see equal to ax plus 10 and this will run. So calling of anonymous function is a variable name. आप डायरेक्ट बस वेरिएबल नेम दे दोगे जो वेरिएबल से डिक्लेयर किया गया. अगर मैंने एक फंक्शन को कोई नाम नहीं दिया है, इट इज anonymous function. Anonymous मतलब उसका कोई नाम ही नहीं है, stranger है वो. Okay, and I will definitely pass this function to a that is a variable that is z. Okay, now next we have the explain the following with respect to JavaScript using suitable examples, event handlers, objects and operator. So event handler code or a function which get triggered. Triggered तो पढ़ा था, on click हो गया, जब आप click करोगे तो कुछ एक event कुछ होगा. Object is a collection of name, value, pair. We have discussed operator or a special symbol. कोई भी operators हमने discuss किया, arithmetic operator, relation operator, and so many operators we have discussed. कोई a specific operation perform करता है. So which are the following are a valid JavaScript variable name? So इसमें से valid आपका देखो, ये देखो function and nan as both are keyword. ये देखो function भी हमारा keyword है. ये जो keyword होते हैं वो हम variable name में use नहीं कर सकते. My dot name as it contains special character. Dot is a special character, आप यूज नहीं कर सकते. और कोई भी आपका जो कीवर्ड है और वेरिएबल नेम है, दैट शुड नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर. से नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट कंटेन एनी कीवर्ड, एंड इट शुड नॉट बी अ रिजर्व वर्ड, दैट इज अ फंक्शन, दैट इज nan, दैट इज अ नॉट अ नंबर. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी आर ऑन 57. Now let's see this 57 question number. So write code snippet in JavaScript to find and display highest value from a given 4 number. ये highest value आपको print करनी है. So high equal to math dot max, 4 वैल्यू आप दोगे. Okay, num1 num2 num3 num4. So math dot max से क्या होगा, highest value print हो जाएगी. Now what is the question number 58? Bitwise dash operator by reversing all the operands. So this जो उल्टा करने का काम यूज करते हैं, this is a inverse operator. ठीक है. Now 59 आप देखो, there is a built-in object called math to handle more advanced mathematical. तो मैथ ही है हमारे पास, ऑलरेडी पढ़ चुके मैथ ऑब्जेक्ट, सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं. नंबर से जावास्क्रिप्ट पर डबल प्रिसिजन 64 बिट फॉर्मेट, ये भी हम डिस्कस किया था. Now 61 is dash is a classification of type of data, that is a data type. 62 variable in JavaScript can be defined using var keyword. Now 63 question, write code snippet in JavaScript for the following. कुछ कोड आपको लिखना है to display the current date and time in browser window. ये देखो, this is a 63 question. करंट डेट प्रिंट करना है. टू डिस्प्ले फर्स्ट फोर कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एंटर बाय द यूजर इन वेरिएबल str, सिर्फ फर्स्ट फोर आपको प्रिंट कराना है. और to generate a random number and check whether it is a even or odd. So random number you have to basically generate, and after that you have to check if it is a even or odd. So script d equal to new date, date equal to d dot get date, इससे भी get मिल जाएगी. इसने month लिया, month हम इसलिए why we are doing this +1. Okay, so now you can see if it is written d dot get date that 4 April, that is 4/4/2022. Okay, so we basically start from 0. ठीक है, मंथ जो आपका स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट हो रहा है. सो 0 से 11 तक लेगा, इसलिए मैं +1 कर रहा हूँ ताकि 0 अगर कोई दे तो 0 इज अ जनवरी, तो वहाँ पे +1 हो जाए. ठीक है, so that's why I'm giving this +1. और यहाँ पे मैंने ईयर के लिए गेट डॉट फुल ईयर लिखा, आवर्स के लिए लिखा मिनट सेकंड. मेन यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, दिस इज द मैथ रैंडम फंक्शन. रैंडम के नंबर कहाँ से, पहले ये देखते हैं. करंट डेट प्रिंट करा दी. नाउ हमें स्ट्रिंग प्रिंट कराना था, str. ये str हमने यूजर से डलवाया है. str where is the str, we can directly, अच्छा चलो डायरेक्टली इसमें लिख भी सकते हैं. यूजर एंटर द str फंक्शन, तो str से मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, दैट इज फर्स्ट फोर कैरेक्टर, यानी कि 0 1 2 3. एक कम तक चलता है, वी हैव ऑलरेडी सीन द सब स्ट्रिंग फंक्शन. ठीक है, और यहाँ पे मैंने रैंडम से रैंडम फंक्शन प्रिंट करा ली 0 से 99 तक, इसमें नंबर आपको मिलेंगे. फिर मैंने चेक करा ली जो नंबर दिया है क्या वो इवन है या ऑड है. ओके, फ्लोर इसलिए यूज किया है, अगर कई बार रैंडम फंक्शन 0 से 99 तक अगर ये 1.5 बिट रिटर्न कर रहा है तो फ्लोर क्या करेगा, सिर्फ वन वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू ओनली.
Now we have this 64, that is I will show you this image. Write a code for OK button. ये इसके लिए कोड बनाना है आपको OK बटन के लिए. To find the length of the name enter in the text box. अगर आपने यूजर है ने एंटर नंबर किया, that is if I write the name Kuldeep Rohila, so you the program should find the length of that name. Okay, so body script function. अब इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा कोड. So इसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया, that is a form name because this is a form. उसमें इनपुट एक मैंने टेक्स्ट वैल्यू ली है, टेक्स्ट इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिया है एंड वैल्यू में लिखा है एंटर योर नेम. तो शो हो रही है यहाँ पे, ये देखो एंटर योर नेम वैल्यू में, नेम में लिखा है T1, इनपुट टाइप में टेक्स्ट है. बटन लिया है मैंने, एक बटन तो प्रेस करोगे, ओके इज अ बटन, उसमें वैल्यू मैंने दे दी ओके. ओके, ऑन क्लिक इक्वल टू str.length. अब जैसे इसको ऑन क्लिक आप करोगे तो वहाँ कॉल हो जाएगा, दैट इज अ फंक्शन इज कॉल्ड. जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसको बटन को, ये कॉल हो गया str.length. तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे F1 दैट इज अ फॉर्म, फॉर्म में क्या होगा T1 हियर इज अ नेम. देखो T1 था ना नाम, और T1 की लेंथ वैल्यू T1 डॉट वैल्यू मिल जाएगी इसको, और यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, इसकी लेंथ ऑफ द. भाई गिवन द नेम इट विल रिटर्न माय लेंथ. ठीक है, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करेगा और लेंथ रिटर्न कर देगा. Explain the type of operator in JavaScript with example. JavaScript operators can be used to perform various operations. ये देखो टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको डाटा टाइप रिटर्न करता है. अगर सिर्फ टाइप ऑफ पूछेगा आपसे तो टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द डेटा टाइप. डेटा टाइप आपको रिटर्न करेगा if it is a number, if it is string or okay. Now these are all the operators we have. You need to revise this because I've already explained in previous video. Explain substring function, reverse function with two example. Now let's see substring. This is a substring method that is used to extract substring. बड़ी string में से छोटी string हमें निकालनी. It's the string that goes from a start index to a one less than a end. Start index 0 से करेगा and इसका जो last index that will goes less than 1, मतलब एक कम तक चलेगा. Now let's see this example. A equal to welcome a dot substring 3 से 6 तक, यानी कि 0 1 2 3 से लेके CO कम ये प्रिंट कर देगा. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप a dot रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स उल्टा कर देगा. Now let's see 67 number question. Percent in JavaScript is, what is this percent in JavaScript? So now you can see here it is a arithmetic operator. We have seen this. कौन सा operator? Arithmetic है, modulus, remainder निकालने के लिए. Now 68, ये कौन सा operator है? This is a bitwise right shift operator है, ये हम पढ़ चुके हैं. Percent करने के लिए this will return the, what it will return? It will return the correct answer, that is integer. ये देखो यहाँ से return कर देगा आपका 10. Nan in JavaScript, this is stand for not a number. Dash can be used on a client side as well as server side. So client side और server side दोनों भी use कर सकते हैं. That we have this JavaScript. तो दोनों side use कर सकते हैं. Okay, so I think that's all for today. So students, you can share with your friends this. This is an important video for before your examination. You should see this video. It contains all the JavaScript programs, and basically what you have to do is just share with your friends, okay, so that all students can take a benefit of this video. Basically, the video contains the JavaScript that is a term to main syllabus of class 2 application, and you have your examination. You all know that. Okay, so thank you so much. Okay, I hope you like this. Thank you so much, everyone. You can leave for that. Thank you so much.